Good afternoon to everyone. Today the last topic of fraction is multiplication and division. First we will take up multiply. How to multiply the number? Suppose they have given 4 by 9 into 27 by 16. Now we have to, there is one thing we have to remember while we are doing multiplication or division. When we are cutting the numbers which are coming in a same table, first thing we have to take a same table for them to cut them, and the number should be both numbers should be like not in a न्यूमरेटर और नॉट इन अ डिनोमिनेटर. हमें जो नंबर लेना है वो एक न्यूमरेटर में होना चाहिए, दूसरा डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तभी हम उसको कट कर सकते हैं. लाइक 4 and 9 नॉट कम्स इन अ सेम टेबल, तो हम 4 और 9 को नहीं कट कर सकते क्योंकि ये दोनों सेम टेबल पे नहीं आते हैं. इसके बाद आता है हमारे पास 4 और 16. 4 और 16 कम्स इन अ सेम टेबल, सो वील कट इट. 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16. ठीक है. नाउ वील सी 4 and 27 not comes in a same table, but 9 and 27 comes in a same table. So 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27. इसके बाद जब हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो हमें न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करना है. तो दैट मीन्स 3 1 ज़ा 3 and 4 1 ज़ा 4. Now next question I am taking up. Suppose 16 by 26 multiply by 42 by 38. Now here 16 and 26 we can cut it by table of 2. Both are coming in a table of 2 because both are even number. Now here 2 8 are 16 and 2 1 are 2, 2 3 are 6. Okay, now 42 and 38 they also are even number, so most probably it will cut with 2. ठीक है, तो हम इसको कट करेंगे 2 से. 21 ज़ा 21, 2 ज़ा इज़ 42. अब 2 1 ज़ा 2, 1 इज़ लेफ्ट, 1 and 8 18, 2 9 ज़ा 18. नाउ यू कैन सी 8 and 13 या फिर 8 और 19 सेम टेबल में नहीं आते हैं. 21 और 13 या 21 और 19 आर नॉट कमिंग इन अ सेम टेबल. तो हमें क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर and denominator with denominator, and after that we are getting the answer. Here 8 1 are 8 and 2 8 are 16. 13 into 19 will be 247. So we'll write down 247. So 168 by 247 will be the answer for this. Now next is division of fractions. Now when we are doing division, so what we have to do, like 3 by 9 divided by 27 by 18. Suppose this is the number. ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसके लिए जब भी हम डिवीज़न करते हैं हमें रेसिप्रोकल पता होना चाहिए. रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब होता है लाइक इफ़ वी हैव 9 by 8, आई वॉन्ट टू राइट डाउन द रेसिप्रोकल ऑफ 9 by 8. तो इट जस्ट रिवर्स ऑफ द दिस फ्रैक्शन. 8 जो है न्यूमरेटर में चले जाएगा और 9 जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे. तो इसमें 8 by 9 इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ 9 by 8. So now when we are doing division, it is 3 by 9. We'll change this sign into, we change the sign of division into multiplication and we'll write down the reciprocal of second term. Remember this thing, we will write down the reciprocal of second term only. तो हमें second term का reciprocal लिखना है. reciprocal का मतलब है reverse. तो 18 will go in a numerator and 27 will come in a denominator. Now we know the table of 3. 3 1s are 3, 3 9s are 27. अब 9 और 9 will not cut. हम इनको कट नहीं कर सकते because both are in denominator. But 9 and 18 will cut. 9 1s are 9, 9 2s are 18. तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 by 9 into 2 by 1. So that will equals to 2 1s are 2 and 9 1s are 9. I hope you understand this. So now you have to solve 16 by 24 divided by 8 by 9.
You have to solve and write down the answer in a comment box. In the videos, many of you have asked what is the difference between HCF and LCM if we are doing this, how to do it. Suppose मुझे 24 and 60 का LCM भी निकालना है और HCF निकालना है, तो फर्स्ट आई विल टेक अप LCM. LCM करने के लिए 24 और 60 का हम 2 से डिवाइड करेंगे. 2 1 ज़ा 2. 24 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 12. 60 divided by 2 is 30. Then I have taken 12 divided by 2 is 6. 30 divided by 2 is 15. Now 2 3s are 6 and 15 as it is, because 15 not comes in the table of 2. Now we'll take up 3. 3 1s are 3. 3 5s are 15 and 5 1s are 5. Now the LCM is 2 into 2 into 2 into 3 into 5. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, and 24 5s are is 4 5s are 20, 2 10 and 2 12. So LCM is 120. ठीक है. और when we have to find out the HCF, what is the difference? Just check, just see in this video. We'll start from 2 because both the number divisible by 2. 24 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया हमारे पास 12, and 60 को डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 30. Now we'll take up again 2 because both comes in the table of 2. 6 and 15. Now this is the difference between LCM and HCF, that अगर हमारे पास HCF में दोनों नंबर एक टेबल में नहीं आ रहे हैं, हम उससे डिवाइड नहीं करेंगे. लाइक हेयर वी हैव डिवाइडेड बाय 2, बट इन दिस वी कैन नॉट. 6 and 15 comes in the table of 3. So 3 2s are 6 and 3 5s are 15, or 2 5 both are not coming in the same table, so we leave it here only. HCF will be 2 into 2 into 3, that will be 4 3s are 12. So the LCM is 120 and HCF is 12. I hope you understand the difference between these two. Thank you.